Good morning, friends. Friends, today we will discuss a very important part of a research paper is sample and sampling. And in this video, content include are what is universe, what is sample and sampling process, probability and non-probability sampling, and discuss with MCQ. It in this video benefits for all the examination related to education subject. Okay, without wasting any time, let's start this video. Okay, educational research class 1 for CPT already discussed many MCQ in this video with concept. Mostly watch in this video. Then mission crack CPET in education introduction class with 20 important MCQ. Paper 1 means CC paper 1s related to the philosophy paper. Okay, then today or in this video discuss sampling techniques. What is sampling, what is universe? Friends, simply say universe is called population. Population, what is the meaning of population? Population is nothing. Population is whole research area or target population. Sampling is nothing. Sampling is part of the population which represent truly in nature. Okay, first we know that what is population and what is universe. Population in universe is nothing. It is a whole area of research. We want conduct a research about teenager. What is my population? My population is a teenager all over the India or across the India. A lot of a vast teenager children are available. It is possible to conduct research about problem of a teenager? No. So the fulfillment of or solution of this problem, many researchers develop sampling techniques. Okay, sampling techniques, it helps to researcher provide data information as similar to the population. Okay, researcher cannot study all teenager, not possible. Then researcher feel necessary of part of study which represent all or whole population called sample. How a researcher choose a good sample from a whole population? Which systematic way to choose a true sample called sampling? Sampling is nothing. Sampling is a process. Sampling is a process, but sample is part of the population which represent truly or fully in different areas. Two representation of population. The process of sampling are mainly divided two types such as probability and non-probability sampling. Okay friends, visible in this PPT, procedure by which some members of a given population are selected as representatives of the entire population called sampling. Sampling is a procedure. Sampling is a procedure, but I want to change the color for clearly visible. Okay, okay. Sampling is a procedure. Okay, step by step.
to choose sample, but sample is a true representative of whole population. Okay friends, next, universe and sample. Universe means the large group from which individuals are selected to participate in this study. In a study, ଯେକୌଣସି ଏରିଆ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ହୋଲ୍ ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ କଲ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସ. ଓକେ, sample, the representative selected for a study, those characteristics verified or characteristics to maintain a homogeneity in nature called sampling. Okay, called sampling. So a character exemplify means verify a large group from which they were selected. Okay, large group रही से आम कि कौन करवा ना भेरीफाए करवा जमी ट्रू रिप्रेजेंटेशन करा आम कहीपर एक्सिम्प्लाय मीन्स आम कहीपर होमोजेनेटिक इन नेचर और सेम नेचर कॉमन नेचर. ओके, पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द गोल, क्यों ए रिसर्चर चूज सैंपल to gather data about the population in order to make an inference that can be generalized to the population. Okay, a researcher take part sample in this portion and it is a accessible population. Okay, then target population is whole population. ओके, टार्गेट पॉपुलेशन इज होल पॉपुलेशन जोटी तार रिजल्ट को जेनरलाइज करिवो कॉल्ड पॉपुलेशन. प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रो मुख्यतः पांचटी टेक्निक को कंसीडर करा होची. डिफाइन द पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्चर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सिलेक्ट पर्टिकुलर पॉपुलेशन एरिया. Okay, develop a sampling frame. Which part a researcher take sample? First of all choose. Second step, third step is select a sample method. Sample method means probability sampling, non-probability sampling, purposive sampling, classified sampling, systematic sampling, quota sampling, sober sampling, etc. Systematic sampling. Determine sampling size. सैम्पल साइज केते हम मन कर मु मोर पॉपुलेशन हूँ 100 मु 10टी सैम्पलिंग ने हो 10 जन लोक ने जदि मोर पॉपुलेशन 1000 थी तेरे मुझे ने 100 ने ऑब्वियसली. तो सैम्पल साइज को आम कौन कर डिटरमाइन करवा तार कौन एक्जिक्यूट द सैम्पल प्रोसेस. सैम्पलिंग प्रोसेस आम केमी हम जदि आमर एरियाटा कौन थाए, जदि आमर एरियाटा फाइनाइट थाए जना थाए एतिकी बाउंड्री आमर अच्छे आम कौन करवा ना ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नवा. ठीक अच्छे, जदि आम एरिया जना ना इनफाइनिटी तेरे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आम ग्रहण करवा. ओके, द सैम्पलिंग प्रोसेस मेन 5 स्टेप टू चूज सैंपल. First, define the population, develop sample frame, select a sample method, determine sample size and execute the sample process. Okay, next, sampling and representativeness. Target population, sampling population, sample. Target population means total population, whole population of a research area. Okay, then sample population, accessible population means जोटी आम एक्सेस करवा क्या ना सैंपल को. ओके, मन उदाहरण नवा मन कर मोर रिसर्च एरिया हूँ
सपोज मु जाना चाहूँगी कि एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक अच्छे मु को पेरेंट्स मान जानी मोर रिसर्च एरिया हूँ ओडिशा कौटी ना रिसर्च एरिया हूँ मोर ओडिशा कौटी रिसर्च एरिया हूँ मोर ओडिशा मु तो ओडिशार सब जगह नहीं जाकि स्टडी करि परिबिनी इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट ऑल पार्ट ऑफ द ओडिशा देन आई टेक ए population sample population or accessible population choose Baleshwar district is my accessible or sampling population in Baleshwar district I choose Remuna block my sample okay Remuna block my sample or Soro block is my sample any block can choose as a sample okay what is target population what is sampling population and sampling population also known as the accessible population and sampling कोडी आस्ता है ना sampling population आस्ता है target population कौन कहा जाए whole population कहा जाए ठीक अच्छे sampling techniques बहुत सारा sampling techniques अच्छी जमी fixed versus sequential sampling probability versus non probability sampling attribute versus variable sampling आमे मुख्यतः यहाँ पर गुरुत्व दबा एटा बहुत इंपोर्टेंट थाए probability versus non probability sampling आमे जानि छंती probability कोन non probability sampling कोन आमे डिस्कस करिबा probability sampling कहा कुआ छे मने कर मो बारे कॉइन अछि कोन अछि कॉइन अछि एटा होछि हेड सपोर्ट होछि टेल एटा होछि हेड सेपट टेल मु टच करी ऊपर को टच पकेबी एटा भी आसीपारे एटा भी आसीपारे हेड आसीपारे किंबा टेल आसीपारे आखो कौन कहबा ना प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग मोर कौन ना दुईटे सीमित अच्छी मु केवल दुईटा भितर जोटा आसीपारे मु जानी मोर रिसर्च एरिया कौन अच्छी ना मोर प्रोबाबिलिटी फिक्स्ड अच्छी मोर प्रोबाबिलिटी फिक्स्ड अच्छी अर्थात मोर प्रोबाबिलिटी कौन से बाउंड्री भितर अच्छी आम कह पर्पसिबल अच्छी आम कहीपर केवल एक पड़ो कि दुई पड़ो कल्ड प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग एक आसपारे कि दुई आसपारे मु डेफिनेटली कही एक कि दुई आसपारे हेड आसपारे कि टेल आसपारे दिस इज कल्ड प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग ठीक अच्छे किंतु जिते बड़े आम गोटे लुडु गोटी गड़ौंट जब आम लुडु गोटे गड़ी कौन हो प्रॉब्लम ना एथे बहुत सारा पार्ट अच्छी ना नहीं बहुत सारा पार्ट अच्छी जदि आम यही पार्ट आम गड़ेबा एठी गोटे पार्ट एठी गोटे पार्ट एठी गोटे पार्ट एठी गोटे पार्ट एक रु आरम्भ कर 6 पर्यंत अच्छी आम कहीपर कि एक कि दुई आसो मे बी 3 आसपारे मे बी 4 आसपारे मे बी 5 आसपारे मे बी 6 आसपारे जदि आम कहीपर गोटे व्यक्ति कह 1 रु 6 भितर जेकोसी गोड़ी पड़ पारे आम तो कहीपर हाँ प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग से कहला किंतु ताकू यदि कहुई 1 कि 3 भितर कौटा आसो ख से कहीपर 1 कि 3 आसो सी गोटे जिन आसो 3 आसो 3 आसपारे न आसपारे नॉन प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग जो थे आसबार संभावना न थाए ताको आम कौन कहबा नॉन प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग जो आसबार टेक्निक थाए बा आमर रिसर्च फाइनाइट थाए एरिया ताको आम कहबा प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग ओके कहीं भी आसपारे कहीं भी आसपारे किसी भी आसपारे प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग रे इक्वल चांस समस्त थाए ओके देन हम देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स बहुत इंपोर्टेंट एटा स्क्रीनशॉट मध्य कर पारो एटा बहुत भलो पीपीटी सैम्पलिंग मेथड प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग कौन इक्वल चांस कौन चांस ना इक्वल चांस देता है एटा कौन नॉट इक्वल चांस मे बी अकर मे नॉट बी अकर ओके तो प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग रे आमे 5टा सैम्पलिंग पढ़िया गोटे हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ओके स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग देन क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़िया एरिया सैम्पलिंग पढ़िया एतिक विभक्त कराई केते भागरे ना पाखापाखि 6 भागर विभक्त कराई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग
stratified random sampling, systematic random sampling, multiple random sampling, cluster sampling, area sampling. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पकई थाए पकईदेव देख मेनली पकईदेव सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्यों सैम्पलिंग रे जाउछ एटा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन मन रखिबा ना आम मन रखिपर S3 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आ होची सी SQ3 मन रखिपर बा SC3 मन रखिबा ठीक अच्छे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग देन सी रोचे क्लस्टर सैम्पलिंग मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग आउ एरिया सैम्पलिंग एते मुख्यतः गुरुत्वपूर्ण नुहे तथापि आम पढ़ा तापर हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आम टेक्निक यूज करिया मन रखापी देख कि टेक्निक मन रख आम मन रखिपर SCP SCP SQ कौन यार हूँ कौन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जहाँ आम कौन कही था जहाँ आम कही था एक्सीडेंटल अर्थात मिलुमिलु मिलଯିव एक्सीडेंटल सी रोचे कन्वेनियंस सैम्पलिंग देन आम देखिए पी रोचे पर्पसिव सैम्पलिंग एस रे होचे स्नोबॉल सैम्पलिंग सी रोचे गोटा सैम्पलिंग ओके तो यहाँ SCP SQ ये दुटा सैम्पलिंग छाड़ी जाइए कौन ना ये अच्छी केवल कन्वेंस सैम्पलिंग अच्छे कोटा सैम्पलिंग अच्छे जजमेंटल सैम्पलिंग अच्छे अदर सैम्पलिंग मेथड खाली मन रखिए आमर पर्पसिव सैम्पलिंग हाँ पर्पस सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग कहुए पर्पसिव सैम्पलिंग कौन कहुए ना जजमेंटल सैम्पलिंग कहुए सैंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यहाँ दुईटी मेथड अच्छी गोटे हूँ लटरी मेथड गोटे हूँ टेबल रैंडम सैम्पलिंग लटरी मेथड कौन ना लटरी मेथड आम बुझापी जा मनकर गोटे कंटेनर अच्छी बा गोटे मुणा अच्छी से मुणारे आमर जेतिकी भी सैंपल रही यहाँ सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग माने इक्वल चांस ऑफ एवरी यूनिटी मे बी टेक सैंपल ओके तो ये इक्वल चांस जेहेतु अच्छी मुझे कौन कौन नंबरिंग करदेली राम 1 हरि 2 सीता 3 या सब भांगीदेली विदाउट एनी बायस सब भांगीदेली भांगी देखिए भितर पुरेदेली पुरे चूज कली मुझे सैम्पलिंग दरकार 5टा सैम्पलिंग दरकार मुझे 5टा चूज करदेली तो यहाँ कौन ना एवरी यूनिटी ऑफ सैम्पलिंग गॉट इक्वल चांस मे बी सैंपल तो ये कौन है इक्वल चांस रहा सेम टेबल रैंडम सैम्पलिंग फिशर बाहर करते स्टैटिस्टिशियन से बाहर करते कौन है टेबल रैंडम सैम्पलिंग किए ना फिशर बाहर करते बंधु एवं फिशर बाहर करते यहाँ पढ़ी पारे ये कौन करते टेबल बनते 1 2 3 4 5 110 120 एटसेट्रा तो हम कौन कह राम करदे रामर रोल नंबर हूँ 1 हरि रोल नंबर 2 विदाउट एनी बायस विदाउट एनी नोइंग विदाउट एनी विजिबल तो यू चूज एनी नंबर 3 6 8 तो यह बेसिस कौन हम आम चूज करिया 3 तो सीतार रोल नंबर ठीक अच्छे सीतार कोड नंबर तो सीता आज माई सैंपल 102 मनकर माधवर रोल नंबर तो माधव इज माई सैंपल ओके देन तापर देखिबा स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग देखिबा स्ट्राटिफाइड कौन हुए ना एथिरे कौन करा जाए ना रिसर्चर मेनली डिवाइड करते स्ट्राटा डिवाइड करते जोटा कॉमन नेचर होमोजेनेटिक ग्रुप रे डिवाइड करते मन कर मु गोटे रिसर्च करुच्ची जोठी बॉयज गर्ल मिसिक अच्छे ठीक अच्छे मत इक्वाल दरकार 5टा गर्ल्स 5टा बॉयज विदाउट एनी बायस इन द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मुझे कौन करी ना सही कंटेनर नेबी विदाउट एनी बायस सही कंटेनर नेबी सही कंटेनर दुटा गार पकईदेवी गोटे मझे गोटे पार्टीशन करदेवी एटी सब बॉयज ना चिट करदेवी ओके लटरी सिस्टम रे एटी गर्ल्स मानकर मु चिट करदेवी ठीक अच्छे ये गर्ल्स मानकर मु चिट करदेली विदाउट एनी बायस मु किसी भी देखी ना क्या ना अच्छी कौन अच्छी किंतु पकईली एवं रैंडमली आंकु चूज कली बॉय 5टा गर्ल्स
पाँचटा ठीक अच्छे मोर ये कौन है केवल ना मु बॉयज को गर्ल्स को अलग करदेली स्ट्राटा डिवाइड करदेली दिस इज स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग देखिए टेक्निक कौन अच्छी से कौन कहते ऑल यूनिटीज ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा इन अकॉर्डेंस विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी गुड यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच stratum okay stratified random sampling is a method of probability sampling in which the population is divided into different subgroups and samples are selected from each of them okay बहुत सिंपल बुझीगला तब नेक्स्ट हम बुझा नेक्स्ट कौन देखा ना सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एवरी केथ आइटम मन कर आगे एग्जांपल नहीं बुझा तापर आगे बुझा ठीक अच्छे मन कर मत चूज कर कौन ना सपोज गोटे मुवी ना हूँ मनकर 3 इडियट कौन हो 3 इडियट मुवी को मोर लोक मानकर मु ओपिनियन नवा चाहूँगी कि 3 इडियट मुवीटा केते भल आउ केते खराब मु तो सबू लोकंकर ओपिनियन नहीं पारिबिनी ये सब लाइन कर लोक छिड़ा मुवी हल बाहर समस्ते यहाँ मुवी हल गोटे लोक बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम लोक गोटे बाहर मोर अर्थ मुवी हल केत बसते मनकर मुवी हल 100 जन बसते केत बसते 100 जन बसते यहाँ कौन मोर हूँ कौन टोटाल पॉपुलेशन मु केमे सैंपल करमी मते 10टा सैंपल दरकार मोर 10 जन लोक ओपिनियन नहीं गले मु मोर रिसर्च कौन करमी ना डाटा एनालिसिस करी कहि परिबी हाँ कि 3 इडियट मूवी भल कि खराब ठीक अच्छे मु केमिति नेबी सिस्टमेटिकली ना मु गोटे सिस्टमेटिकली इंटरवाल रखी 100 पिंपल इंटरवाल केते मन कर सपोज मु जन पचारि 10 जन मु फास्ट जन पचारि मोर 10टा सैंपल नवार अच्छे मु 10 जन पचारि मु फास्ट जन पचारि मूवी भल कि खराब हाँ येस मूवी भल अच्छे तापर मु 10 जन को छाड़देवी 10 जन छाड़ सारापर पुणी केते नंबर पचारि 11 नंबर पचारि ठीक अच्छे 1 पचारि पुणी 11 नंबर पचारि 11 नंबर पर केते नंबर पचारि पुणी 21 नंबर पचारि 10 नंबर इंटरवल रखिले मोर 100 हो जाए पाखापाखि 100 हो 1 पचारि 10 पचारि 20 पचारि 30 पचारि 30 नंबर जी आसा 30 नंबर पचारि पुणी 10 जन छाड़ी पुणी 40 नंबर पचारि एमती मुझे 10 जन कौन कली पचारिदेली आउ गोटे एग्जांपल नवा मन कर क्लासरूम रे पिला माने अछंती 100 जन 200 जन पिला अछंती मनकर 10 जन पिला अच्छे ठीक अच्छे मोर 10 जन पॉपुलेशन बेसी बड़ नबानी मोर 10 जन पॉपुलेशन मु कौन कली ना मोर दरकार 5टा सैंपल मोर हो ठीक अच्छे 10 जन नेली 10 जन पिला पचारि 5 जन पिला पचारि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मु 2 नंबर पिला पचारनी पुणी गोटे इंटरवल छाड़देवी पुणी 1 जन पिला पचारि पुणी आपको छाड़देवी पुणी 1 जन पिला पचारि पुणी आपको छाड़देवी 1 जन पिला पचारि पुणी आपको छाड़देवी 1 जन ए पिला पचारि पुणी आपको छाड़देवी पुणी 1 पिला पचारि तो सिस्टमेटिकली मेंटेन सम इंटरवल अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू योर रेशियो ऑफ अ सैंपल ओके कौन लिखला सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग इज ए मेथड ऑफ probability sampling in which the defined target population in order and the first unit of a sample is selected at random and rest of the sample is selected according to the positioning using keep interval मु बुझे सारी इंटरवाल फास्ट तुम चूज कर क्या 2 नंबर हो 3 नंबर हो 4 नंबर हो चूज करदेल से इंटरवाल अनुसार तुम आगक आगक चूज कर ठीक अच्छे ये केन अनुसार तुम इंटरवाल चूज कर देन जीवा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एत भी गुरुत्वपूर्ण तथापि यूजिंग इन लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट स्टेज preparation of large size sampling units randomly select a certain numbers second stage हम कहने another list prepare from them सब sample drawn by the random sampling एटा बहुत इजी मतलब यूज करा जाए ना एटा इतने इंपोर्टेंट मध्य नहीं नेक्स्ट जीवा क्लस्टर सैम्पलिंग
very very important. Cluster sampling कौन ना से कौच जो भास्ट पॉपुलेशन थाए जो भास्ट पॉपुलेशन थाए जो आम क्लस्टर सैंपलिंग को आम यूज करते फास्ट डिवाइड होल पॉपुलेशन मेनी ग्रुप्स मीन्स क्लस्टर देन रिसर्चर्स चूज एनी ग्रुप ओके इन रैंडम बेसिस ओके सपोज गोटे उदाहरण नहीं बुझा मने कर इंडिया हूँ मो पॉपुलेशन मो विभिन्न क्लस्टर रे विभिन्न स्ट्राटा रे विभक्त करदेवी ठीक अच्छे होमोजेनेटिक इन नेचर डिवाइड करदे ओडिशा बेंगल बिहार यूपी मध्य प्रदेश केरल तमिलनाडु सपोज 28 राज्य को मु डिवाइड करदेली आंक भितर मु कौन करी एम भितर मुझे चूज कली हूँ ओडिशा कौन है ओडिशा बा बेंगल बा बिहार मुझे चूज करदेली ओडिशा कौन कली ओडिशा मु कौन करी ना ओडिशा पर तो पुणी रिसर्च करवा इम्पॉसिबल ओडिशा पुणी कौन जिला चूज कली बालेश्वर मध्य सबकि करवा पॉपुलेशन को लेकिन संभव एत मात्रा नुहे बहुत टाइम एक्सपेंसिव हो टाइम टेकिंग हो बालेश्वर कौन ना बस्ता ब्लॉक को चूज कले ठीक अच्छे बा रेमुणा ब्लॉक को चूज कली ठीक अच्छे रेमुणा ब्लॉक रे मध्य पुणी यदि आमर कैपेसिटी न हुए रेमुणा ब्लॉक रे आउ कि सैंपल चूज करि पारे बा एटसेट्रा कौन से गाँव चूज करि पारे बा कौन से एक पंचायत चूज करें एनएस एरिया चूज करें इट मीन क्लस्टर सैंपलिंग ठीक अच्छे क्लस्टर सैंपलिंग कौन कोई कन्स्ट्रक्ट देखा द प्रोसेस ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड रिएक्ट ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल्स विदिन द डिफाइंड पॉपुलेशन शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कही सारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजेनेटिक इन नेचर थी स्टेप्स डिफाइंड पॉपुलेशन इज divided into number of multiple exclusive and collectively exclusive subgroups or clusters ठीक है homogenetic existing subgroup में डिवाइड कर दबा select an independent sample randomly बा random sample in cluster तो आम जहाँ भी किसी नबा randomly नबा जो 28 राज्य आम चूज कले इंडिया रे क्यों राज्य को नबा आम जानना आम रैंडमली नबा ओडिशा आसी पारे बिहार आसी पारे नबा पुणी ओडिशा भितर भद्रक जीव कि बालेश्वर जीव कि मयूरभंज जीव कि गंजाम जीव कि पुरी जीव पुणी रैंडम चूज करवा पुणी भद्रक भितर केते अच्छे बालेश्वर मध्य केते बस्ता जीव कि रेमुणा जीव कि सोर जीव पुणी रैंडम चूज करवा जेपर्यंत आमर आम कैपेसिटी भितर आसे सैंपलिंग से रैंडमली चूज करा सब किसी स्मॉल यूनिट पर्यंत ठीक अच्छे ये क्लस्टर सैंपलिंग तापर देखा एरिया सैंपलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड एटा को हमें नेक्स्ट क्लास रखा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट एंड कमेंट केमी लगिला कमेंट करंतु एंड शेयर करंतु सांग मानक जो माने भी एजुकेशन सेक्टर रे पढ़ुचंती से जेकोन सेक्टर हो शेयर करें जदि एग्जाम्पल कंटेंट पीपीटी जदि किसी मात्रा आपको बेनिफिट देता निहाती भाव सब्सक्राइब कर मतलब उत्साहित करने सहित आगामी वीडियो देखा रेडी हो था जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।